Okay, so a juice shop, the shopkeeper sells mango, orange, and pineapple juices. How many juices? So he is selling 3 juices, and for to make one type of juice, he has an exclusive mixer. So apple juicer will make only apple juice. Mango mix juicer will make. Okay, so this is a mango juicer, apple juicer. Take any other fruit. Pineapple. Pineapple juicer. So how many juices he has? In 1 second, okay? In 1 second, 2 different milkshakes he can make in 1 second. So in 1 second, he can make how many juices? Yeah, 2 different juices. That's all. Means he can operate 2 juicers simultaneously, not more than that. So if a customer comes and places an order of 1 mango and 1 apple, customer places an order of 1 mango and 1 apple. How much time will it take him to prepare this order? 1 second, because both the juices can run parallel. So this answer will be 1 second. If a customer comes and places 2 mangoes, then 2 seconds, because mango juice से बनाएगा ना, हाँ एक ही टाइम पे. So max to max he can run 2 juicers, but one juicer will make only one type of juice. So if he enters 2 mango, this will take 2 seconds, because both the juices will be made on the same mixer, the first second and second. Correct? So this is the question. Now he says if he gets an order of 544, how much? Customer comes and places order of 5, 4, and 4. So how much time? Fastest, how much time can it deliver this? So let's try to do it in Excel sheet. 544, right? So how many juices are there? 544, correct? So, and this is apple, mango, and pineapple. So what we would do is, for the first 4 seconds, we'll prepare the apple and mango. So 1 apple, 1 mango, 1 apple, 1 mango, 1 apple, 1 mango, 1 apple, 1 mango. So after 4 seconds, how many juices have been prepared? Mango done. So no more mangoes left, and 1 apple is left, and 4 pineapple is left. Correct? Then in the 5th second, what will you do? 1 apple and 1 pineapple. Correct? And then this is also done. And balance how many? 3 are left. And then in the 6, 7, and 8 second, I will make 1, 1, 1. So I can deliver this order in minimum 8 seconds. So allow the customer to wait for 8 seconds. So as the customer gives the order, we'll run this algorithm in the background, and on the bill will print. Order will be served to you after 8 seconds. Immediately. So that will be a robotic system we have generated. So max to max, you can generate this in 8 seconds. Now, my question is, can anyone do it faster? So I can generate this order in 7 seconds. So for that, we will learn priority queue. For that, what will we learn? Priority queue. Okay. So priority queue is, queue works on which, stack works on which phenomena? Last is first out, and queue works on FIFO, first in first out. But priority queue is a different sort of a queue. If I insert 10, 20, 40, 30,
and 50. If I insert them in this order, I can configure the priority queue in two ways, max heap and min heap. Max heap means the maximum number comes out first. Priority will be given to the maximum number. So which number comes out first? So even though I added them in this order, but while removing, what will come out? 50 will come out first. And the queue will be left with only this value. The next, again, when I do a remove, in stack we have push pop. Here we have add and remove. So when I do a remove, what will happen? What will come out? 40 will come out. The stack and the queue will be 10, 20, 30. Then when I do a remove, then when I do a remove, and then when I do a remove. So this is when the priority queue was configured in max heap. What if the priority queue is covered in min heap? Then the smallest number will come out first. Which will come out first? And this will remove. Remove means remove from the queue. Then next 20. Then next. Then next. 40. And then next. So here we can use priority queue and increase the time. Okay. So let's see how priority queue can help us improve the time. What was the initial order? 544. Correct. Now what I do is I store this in a priority queue. I'll make a priority queue PQ. And what does the PQ contain now? 5, 4, 4. Correct. I'll take till my priority queue is not empty. While my priority queue is, this loop will run till while my PQ is not empty. So not लगा दिया उसके आगे. While my PQ is not empty, come inside. I will take two juices and initialize both of them to be 0. Now where am I doing this? Inside the loop or outside the loop? So in each iteration they will become 0, or only in the first iteration they will become 0. This J1 and J2 will become 0 in each iteration, only in the first iteration. Each iteration. So let's come over here. And now I'll have these two juices, J1 and J2. J1 also is 0 and J2 also is 0. Correct? And what is my data which I've got the customer has given me? Thus I have added to the priority queue. Priority queue is 544. J1 is 0, J2 is 0. Now I'll configure this in max heap. Configure the priority queue in which one? Max heap means which number will come out first? So first we'll check if the priority queue contains elements or not. For that we will use iterator. What will we use? Iterator has methods to check whether the queue has data or not. We just have a method to check whether the queue is empty or not. So iterator has a method to check whether the queue has has more elements or not. So does the queue have elements? Yes, true or false? True. Remove. What will be removed? Which is maximum? 5. Remove it and put it in J1. And then we'll take the second count also, okay? Initialize to 0. Second count initialize to 0, correct? Okay. Now J1. So now the 5 is removed from the queue and put into J1. Now is the queue empty? Does the queue has more elements? Yes or no? Does the queue have more elements? Now remove again. What will be removed? Any of the 4. So let's say this is removed. I put it where? J2. Now are these both greater than 0? Yes, sir. So you will check if my J1 is greater than 0 and my J2 is greater than 0. Yes? So you will do seconds plus plus. What will you do?
seconds plus 1 second will become 1. That means 1 second has passed and one juice has been made of 5 and 4. Now what is the balance now? 4, 3. So what will I do? J1 minus minus and minus. How many juices to be made now? Now is J1 greater than, are there more juices to be made of juice J1? Put it back in the queue. So if my J1 is greater than 0, do what? PQ dot add J1. So 4 gets added back to the queue. And is more juice to be made of J2? Yes or no? Is J2 greater than 0? PQ dot add J2. So what does PQ contain now? 3, correct? They added back to the queue. Okay, queue is not empty. 3, 4, 4 is not empty. Come inside and initialize J1, J2 to again 0. Now from the queue, okay? So we will from the queue will fetch, right? From the PQ dot remove. So what will it remove? What will it remove? So put it where? First you have to check, okay? Check if element exists. If yes, remove it. If yes, do what? So remove, what will it remove? 4, any 4. Put it where? And then check if element exists further. And remove, put it where? J2. So what will come in J2? J2 also will have 4. Is J1 greater than 0 and J2 greater than 0? And over here. Second plus plus, second becomes, and they will become 1, 1 minus of them. Is J1 greater than 0? Push it back to the queue. So we had 5, 4, 4. Then we had, okay, first we had what? 5, 4, 4 in the first iteration, correct? After that we removed 5 and 4 and pushed what? 4 and 3, correct? And now what have we popped? 4 and 4 we have popped. And what are you pushing again now? 3 and 3, correct? This is both minus minus and pushed. Loop finishes, come inside PQ. Is the queue not empty? Elements are there. Come inside. Remove, and what will come over here? 3. This is removed. And now 3. Okay. J1 greater than 0 and J2 greater than 0. Increment by 1. And this becomes 2 and 2. Is J1 greater than 0? Push it back and push it back, correct? Now come inside. Q is not empty. Push. So what now? What will I fetch? 3 first, and then 2. Both greater than 0. So do what? 2 and time becomes 4. Both greater than 0. Push it back. Next, what will I? Again, this becomes 0. Next, what will I push? 3 and 2. So 3 and 2 have been removed. Minus minus 2 and 1. 2 greater than 0. Okay, size this increases. 5. 2 greater than 0. 1 greater than 0. Both pushed back. Again 2 and 1. 2 greater than 0. 1 greater than 0. This becomes 1. This becomes, and this count increases to 6. Now is 1 greater than 0? Push it back. Is 0 greater than 0? Now don't push.
Okay, the queue still has more elements. Queue is not empty. Now remove, what will happen? 1 over here and 1 over here, correct? But both greater than 0, and this becomes 7. Is there anything to push? No. Queue is empty now, and display the answer as. समझ में आया? ओके, अब इसमें एक यूज केस ये समझ में आ गया ना, पूरा लॉजिक। अब इसमें एक लॉजिक ये समझना जरूरी है। अगर होता 400, अब तो पीक्यू में क्या आता? 400 आता, सेकेंड 0 हो जाते, ठीक है। फच करता तो J1 में क्या आता? 4 आता, और J2 में क्या आता? तो अगर यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 0 है, मतलब डायरेक्ट इतना सेकंड ऐड कर दो, क्योंकि और कोई क्यूट है नहीं ना। तो वो यहाँ पहले वो चेक कर लेना कि इफ माई J1 इज ग्रेटर देन 0 and my J2 is equal to 0, डायरेक्टली डू व्हाट? सेकंड में किसको ऐड कर दो? हाँ, और ब्रेक कर दो। क्या कर दो? क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बस ये खेल है इसका, तो समझने की कोशिश करो। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो 544 का आंसर क्या आएगा? 544 का आंसर क्या आना चाहिए? अपना 8 आ रहा था ना, 7 आएगा अभी। नहीं, पहले 8 आ रहा था ना। और 142 का क्या आएगा? क्योंकि पहले 4 और 142 को ट्राई एंड कर लो। 142 को बताओ, 1 4 और 2 को बताओ, जल्दी बोलो फटाफट। 142 पहले कौन जाएगा? 4 2 जाएंगे, दोनों प्लस है, फिर क्या हो जाएंगे? 3 और क्या हो जाएगा? 1, और सेकंड क्या बन गया? 1, वापस क्या पुश हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर कौन आएगा नेक्स्ट? 3 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से वो निकल जाते हैं, रिमूव होते हैं, यहाँ से निकल जाते हो। तो अभी 2 और 0, और ये क्या हो जाएगा? अब ये ग्रेटर 0 है, तो ये पुश हो जाएगा, ये पुश नहीं होगा। पार हो गया, ये ऊपर गए, डेटा है अभी भी, QMT नहीं है। रिमूव करो तो क्या आएंगे? अभी क्या आएगा? 2 1 आएगा, ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 0। 1 ग्रेटर देन, ये टाइम बढ़ जाएगा। 1 ग्रेटर देन 0 है, तो पुश हो जाएगा बस। ये 0 है क्या? ये नहीं होगा, ऊपर जाएगा। QMT नहीं है, एक रिमूव कर ले तो क्या आ गया? 1 आ गया। दूसरे में तो कैरी फॉरवर्ड 0 ही रहा, दूसरे में कुछ भी नहीं आया ना। रिमूव क्या है? क्यू में एलिमेंट था ना, तो रिमूव कर दिया। क्यू में एलिमेंट था ही नहीं, तो J2 0 का 0 आ गया। अब J1 ग्रेटर देन 0 एंड J2 इज इक्वल टू 0, एड द J1 टू द सेकेंड एंड ब्रेक। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। So let's check this out. So try to get yourself comfortable with solving such level of questions. इसका नाम दे रहा हूँ जूस वर्ल्ड में, जूस वर्ल्ड प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तुम लोग जब डाउनलोड करो गिटहब से, तो यू शुड हैव आइडिया कि क्या कर रहा था। चलो, तो अभी अपने क्या करना है? यूजर से क्या लेना है? क्या बोला? एंटर नंबर ऑफ जूसेस। कहाँ से है? क्या है? मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल। मैंगो जूस, मैंगो जूस इज इक्वल्स टू 80, करेक्ट। मैंगो, ऑरेंज,
और ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटीजर मिनिमम सेकेंड्स इक्वल्स टू कैलकुलेट टाइम फंक्शन कॉल करते हैं और ये तीनों पास कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सिस आउट मिनिमम टाइम, एक मिनट। सो कैलकुलेट टाइम विल गिव द मिनी सेकेंड्स एंड डिस्प्ले द मिनिमम टाइम टेकन, और क्या दिखा देंगे हम लोग, मिन सेकेंड। ठीक है, ये फंक्शन है, बना लेंगे, फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, एक प्रायोरिटी क्यू बनाने वाला, क्या बनाऊंगा, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, उसका नाम हमें क्या डालेंगे उसके अंदर, और क्या देंगे, पी क्यू इज न्यू। एक मिनट है, फोन आया। हेलो, ओके, सो प्रायोरिटी क्यू न्यू इज न्यू प्रायोरिटी क्यू एंड विच ऑर्डर वी वांटेड टू कॉन्फ़िगर, मैक्स और मिन, मैक्स। तो नॉर्मल ऑर्डर मिनिमम है बाय डिफॉल्ट, अगर मैक्स करना तो रिवर्स ऑर्डर करना पड़ता। तो कलेक्शंस करके जो हमारा यूटिलिटी क्लास है कौन सा, उसका एक रिवर्स ऑर्डर करके मेथड आता है, उससे प्रायोरिटी क्यू किसमें काम करेगा, अभी मैक्स में काम करेगा। ठीक है, और अभी इसमें क्या कर देंगे हम लोग, आते ही ऐड कर देंगे क्या, ये जो आए ना ये ऐड कर देंगे, मैंगो जूस और ऑरेंज जूस और क्या, पाइन एप्पल जूस। ठीक है, कब तक लूप चलाएंगे, लूप जब तक ये एम्प्टी नहीं होती। अंदर आएंगे, दो लेवेंगे वेरिएबल J1, उसको बोलेंगे 0, उसको बोलेंगे J2 इक्वल्स टू 0। अगर मुझे चेक करना है कि इसमें एलिमेंट्स है क्या नहीं, तो उसके लिए हम इटरेटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो वो लगा देंगे उसको, इटरेटर, वो मुझे क्या देगा, इंटीजर देगा, उसका नाम दे दूंगा ITR, और किसको लगा देंगे, PQ को, तो PQ डॉट इटरेटर। ठीक है, इटरेटर फॉर्म यूटिल। अब क्या करना है, चेक करना है कि, नहीं नहीं वो सब चेक करना है आपने को बस। तो इटरेटर क्या करता है, इसका फंक्शन है हैज मोर। ठीक है, एक्स नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, सो इफ इट डॉट हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, तो रिमूव कर लो, रिमूव करने से पहले चेक कर लो कि एलिमेंट है क्या नहीं, बस ये वो, वरना थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो क्या करो, PQ डॉट रिमूव, PQ डॉट रिमूव, और किस में डाल दो, J1 में। ठीक है, अगर वो सिर्फ एक ही नंबर पास करता, सिर्फ एक ही फ्रूट पास करता, मुझे सिर्फ एक मैंगो जूस चाहिए, मैंगो जूस, तो अपन सिर्फ क्या ऐड करते हैं, मैंगो जूस ऐड करते हैं। तो अब अगर मैं J2 निकालने के लिए डायरेक्ट लिख कर देता, PQ डॉट रिमूव, PQ डॉट रिमूव कर देता मैं, और बोलता कि पुट इट इनटू J2, तो इट थ्रो एन एक्सेप्शन, कुछ रिमूव करने है नहीं, जो रिमूव था वो तो निकाल लिया आपने। तो इसके लिए ये इटरेटर चेक करता है कि अगर है तो रिमूव करो, तो फॉल्स हो जाएगा ना, नहीं तो फॉल्स 0 लेके आएगा ना आगे जाके वो। तो जब लास्ट में एक ही जूस बचेगा 1, तो चेक करेगा हैज नेक्स्ट है क्या, 1 मिला तो निकाल लो। नेक्स्ट टाइम वो जब वो चेक करेगा तो ये इफ फॉल्स हो जाएगा ना, तो J2 का जो ओल्ड वैल्यू वही कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इफ ITR डॉट हैज नेक्स्ट, PQ डॉट रिमूव J1 में डाल दो, ITR डॉट हैज नेक्स्ट, PQ डॉट रिमूव J2 में डाल दो। अब क्या चेक करो, सबसे पहले अगर J1 भी ग्रेटर देन 0 है एंड J2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो, क्या करो, सेकेंड्स, क्या नाम दिया आपने, सेकेंड्स दिया ना, वो डिक्लेयर किया ही नहीं क्या आपने, सेकेंड्स, इंटीजर
सेकेंड इक्वल्स टू 0, और क्या बोल दिया, सेकेंड्स प्लस प्लस, और क्या करो, J1 माइनस माइनस और J2 माइनस। अब ये होने के बाद में अगर J1 फिर भी मोर देन 0 है तो वापस पुश करो उसको, PQ डॉट एड J1, और अगर J2 भी ग्रेटर देन 0 है तो PQ में वापस ऐड करो J2। ओके, और फिर वापस गए। अब ठीक है, लास्ट में अगर अपना सिर्फ एक ही आता है तो ये नल आता है। हमने क्या बोला था, इफ माई J1 is greater than 0 and my J2 is equal to 0, then what will we do, सेकेंड में किसको ऐड कर दो, J1 को, और क्या कर दो, आगे जाने की जरूरत है क्या, तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू से अपन वो वाला कर सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना है। हाँ, ये हो गया, और अभी वाइल हो गया, और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न द टाइम, राइट, रिटर्न व्हाट, ओके, so let's check this out and check if it's working or not। तो क्या था, 544 ना, क्या आ गया, 7 आ गया, 300 ना, सेकंड क्वेश्चन क्या था, चेक ऑल द परम्यूटेशंस, 300 क्या आएगा, 300, ठीक है। तो क्या कर रहा है, पैच कर रहा है, J1 में क्या आ गया, 3 आ गया, J2 में क्या आ गया, 0 आ गया, J1 greater than 0 and J2 is equal to 0 to what, seconds is seconds plus 3 and break, करेक्ट, क्या आ गया, 3 हो गया, राइट। और 14 क्या था, 142, क्या था, 142 का आंसर क्या था, ओ, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू ऑल गाइस, आ रहा तुमको यूज केस समझ में।